अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इंटू अनदर क्लास। स्वागत है आपका फिर से एक बार एक और क्लास में। साइंस है और आज का टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमंस। जैसा कि हम जानते हैं कि डाइजेशन माउथ यानी कि मुंह से शुरू होती है और इंटेस्टाइन्स में जाके ख़त्म होती है। पहला स्टेप माउथ। When we take in food inside, it goes in the mouth. It undergoes both mechanical and chemical changes. अगर हम माउथ की बात करें, इसमें बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो पार्ट प्ले करते हैं डाइजेशन के लिए। हालांकि हम लिप से, टीथ से लेकर हमारे हार्ड प्लेट, सॉफ्ट प्लेट, टंग, फैरिंक्स, नेजोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स, पूरे जो है एजा एक साथ मिलके डाइजेशन में मदद देते हैं। बट मेजर थिंग्स, मेजर पार्ट्स ऑफ द माउथ that take part in the digestion, we can say that which have the major role in digestion are salivary glands and the teeth. दांत चबाते हैं, मैकेनिकल चेंज लाते हैं इसमें, और जो saliva है from salivary glands, they bring about the chemical change. अगर हम टीथ की बात करेंगे, दांतों की बात करेंगे, हम जनरली हम कहते हैं कि दो किस्म के दांत होते हैं। एक है एक्रोडोंट और दूसरा थीकोडोंट। एक्रोडोंट इज आर फिक्स्ड टू द jaw bones as we see in the frog, and thecodonts, their teeth are in the sockets. Again we see there are two types of the teeth. We call that as diphyodont and monophyodont. Diphyodonts, there we see permanent teeth and deciduous teeth, or we can say milk teeth or deciduous teeth, or we can say temporary teeth. We shed that with the passage of the time, and permanent teeth. And monophyodonts में हम देखते हैं कि animals retain that during the lifetime, all through the lifetime. So there is no shedding in the monophyodonts, and diphyodonts we say there are temporary teeth and permanent teeth. Temporary teeth are acquired from the age of, in the humans, from the age of 6 months onwards up to 2 years, and the shedding take place from start from 6 years, and permanent teeth remain then as the lifetime teeth. Then again we see here again we have two types of the teeth. We say homodont and heterodonts. Homodonts, we say there is no difference between the teeth. So teeth are alike. यहाँ पे दांत एक जैसे होते हैं मोनोफाइडोंट्स में, जैसे टूथ वेल में देखते हैं, और एक ये मिसाल वहाँ पे भी फिट होती है जहाँ हम कहते हैं मोनोफाइडोंट्स। होमोडोंट्स की मिसाल भी वहाँ पे फिट होती है वेल में, टूथ वेल में। और हेटेरोडोंट की बात करें, they in this
we see these type of the teeth in humans. There are different heterium mean different. We see incisors, canines, premolars, and molars. These were the different types of the teeth and the description of the teeth in a nutshell. Then again, we can go to the composition of the teeth. There is the dentine, type of the substance which is covered on the pulp cavity, and above on the crown is a type of the substance called enamel, a hardest substance, and below the crown are roots that go in the sockets. So these were the types of the teeth. Now we see the work of the teeth. They help in mastication or chewing of the food. गुज़ा को चबाने में उनका बहुत बड़ा रोल है. और उसके बाद जो ग्लैंड्स है, दूसरा रोल जो ग्लैंड्स का है, हमारे यहाँ मुंह में salivary glands 3 किस्म के हैं. नंबर 1 parotid glands, नंबर 2 sublingual और नंबर 3 submaxillary. From these glands, saliva is being dropped in the mouth, which moistens the food, lubricates the food, and also has the enzyme in it known as salivary amylase of ptyalin, which attack upon the carbohydrates. After the mastication, moistening, in a semi-solid form, the food from mouth is being pushed down to the stomach through esophagus. The major role is being played by the tongue in throwing or pushing down the food towards the esophagus. Then in the stomach में again food goes in a series of changes. Stomach को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डिफरेंट रीजन्स में, जैसे कॉर्डिक रीजन है, फंडस रीजन है, बॉडी है और पाइलोरिक रीजन है. In the food, in the stomach, again there are different types of gastric glands or gastric cells which secrete different types of juices, gastric juices, which include enzymes, HCl, some proteins, and even some hormones are being released in the stomach. पहले बात करते हैं enzymes की. Gastric glands एक खास किस्म की cells है, वहां पे उन्हें chief cells या zymogen cells कहते हैं, which release enzymes. Though in the inactive form, which get activated later on, जैसे प्रोरिनिन है, पेप्सिनोजिन है या पेप्सिन है, and even gastric lipases are secreted in the stomach, which these propepsin or pepsinogen is being then activated to pepsin, which act upon the proteins, and again renin or prorenin is activated to renin, which acts upon the milk protein, and lipases act upon the lipids or fats. ये होता है स्टोमक में, जो कि एक एसिडिक एनवायरनमेंट में होता है ये डाइजेशन.
Again, there are cells, we call them as oxantic cells or parietal cells या एसिड सेल्स भी उनको कहते हैं, जो एक किस्म का एसिड रिलीज करते हैं जिसे हम HCl कहते हैं, और ये एक एनवायरनमेंट बनाता है डाइजेशन का, और HCl ही माना जाता है कि ये एक्टिवेट करता है प्रोरेनिन को रेनिन में या प्रो पेप्सिन को पेप्सिन में या पेप्सिनोजन को पेप्सिन में। ये पैराइटल सेल्स इसके अलावा एक किस्म का प्रोटीन भी रिलीज करते हैं जिसको हम गैस्ट्रस इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर कहते हैं, जो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में मदद देता है। इस स्टोमक का पाइलोरिक रीजन जो है ये एक किस्म का हार्मोन रिलीज करता है, एंड दैट हार्मोन इज नोन एज गैस्ट्रिन, or which stimulates the secretion of enzymes, it is said that, and HCl. So this was the process of digestion in stomach. And apart from this chemical change that food materials undergo in the stomach, there is also a churning moment of stomach which bring about the mechanical change also, and this food reaches the pyloric region of the stomach, and as of now it becomes chyme. We call that as chyme, a liquid paste, and we call it as chyme, and it's then being pushed towards the small intestines. And we will continue this lesson, and we will talk about the changes that take place in the small intestines. It will be in the immediate next lesson, or in that which will follow this lesson, inshallah. Have a good time. Assalamu alaikum.